हेलो दोस्तों, मैं अरविंद आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने चैनल ट्रिकी दुनिया अरविंद में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं करने जा रहा हूं बोट स्टोन 1000 वर्सेस बोट स्टोन 1500 का कंपैरिजन। यहां पर मैं आप लोगों को साउंड का कंपैरिजन करके दिखाऊंगा और बताऊंगा इसमें साउंड कौन सा आप लोगों को सुनाऊंगा, कौन सा साउंड आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा वो आप लोग चेक कीजिए और उसके बाद कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिएगा। दोस्तों करना है कि आप लोगों को सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना है और बेल आइकन प्रेस करना है। और दोस्तों यहाँ पर हेडफोन का यूज़ जरूर कीजिएगा ताकि आप लोगों को साउंड की क्लैरिटी अच्छे से पता लग जाए। यहाँ पर आप लोगों को क्लियर हो जाएगा आप लोगों को कितने पैसे लगाने चाहिए ताकि आप लोगों को बेस्ट साउंड आउटपुट मिले और कौन सा स्पीकर इन दोनों में से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। तो चलिए दोस्तों करते हैं स्टार्ट। फिर से वही एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।
I'm gonna take it down. Give it to me like, I'm gonna take it down. तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को यहाँ पर साउंड की क्लियरिटी से पता चल गया होगा कि आप लोगों के लिए कौन सी स्पीकर कौन सा इसमें दोनों में से आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर बजट का सिर्फ डिफरेंस है, साउंड आउटपुट आप लोगों के लिए कैसा रहा है वो आप लोगों ने क्लियर कर लिया होगा। कोई खास डिफरेंस देखने को नहीं मिला है मुझे। बेस वगैरह के रिलेटेड आप लोगों को क्लियर हो गया, सारा कुछ टेस्ट करा दिया फिलहाल यहाँ पर मैंने आप लोगों को। और दोस्तों यहाँ पर एक और वीडियो मैं लेके आऊँगा जल्दी, जिसमें आप लोगों को बोट स्टोन 1500 की एक रियलिटी बताऊँगा कि अगर उसको परचेज़ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, बेस वगैरह कैसा है उसको ऑलरेडी आप लोग जज कर चुके हैं, तो इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं फिलहाल वो वीडियो लाऊंगा बहुत ही जल्द। यहाँ पर बोट स्टोन और 1500 और 1000 वाले में अगर मेरी ओपिनियन आप चाहते हैं तो मैं बताऊँ तो मेरे हिसाब से बोट स्टोन 1000 मुझे 1500 वाले से काफ़ी बेटर लगा है। बोट स्टोन 1500 वाले में आप लोगों को कुछ ही चीज़ें अच्छी देखने को मिलती है, जैसे उसमें बैटरी 4000 mAh की है, IP वर्जन 7 लगभग, यानी कि स्प्लैश प्रूफ थोड़ा ज़्यादा अच्छा देखने को मिलता है। पर उन सब चीज़ों से मैटर यहाँ पर नहीं करता है। आप लोगों को अगर सब बेस की क्वालिटी अच्छी चाहिए तो और कोई खास छेड़खानी नहीं करना चाहते तो बोट स्टोन 1000 आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगा। पर अगर आप लोगों ने बोट स्टोन 1500 परचेज़ कर रखा है तो उसमें आप लोगों को कुछ टेक्निकल दिमाग लगाना पड़ेगा, और वो क्या करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों को बता दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप लोगों ने अभी भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। हैव ए नाइस डे। Turn it up again, I'm gonna take it down. Turn it up again, I'm gonna take it down.